Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 25 of Business Mathematics MTH367. So in today's lecture we will continue with chapter number 16, optimization methodology. So we briefly review the last lecture. So we basically covered section 16.2. So identification of maxima and minima was basically the main topics. So we studied what is relative extrema, that is relative maxima and minima, and then we studied what is absolute maxima and minima. After that we moved to first derivative test and second derivative test. Last lecture में हमने section 16.2 cover किया और section में हमने identification of maxima और minima को study किया. पहले हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी कि रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होता है. उसके बाद हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करके फाइंड किया कि किसी भी फंक्शन को रिलेटिव मिनिमा और रिलेटिव मैक्सिमा किस तरह से फाइंड किया जाता है. सो टुडेज टॉपिक्स, सो वी विल कवर सेक्शन 16.3 and 16.4. So we will start with the curve sketching, and after that we will move to restricted domain considerations, and at the end we will study that the procedure for identifying absolute maxima and minima. तो हम आज कर्व स्केचिंग से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के ऊपर किस तरह से स्टडी करते हैं फंक्शन को वो पढ़ेंगे, और आखिर में एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड करने की जो टेक्निक्स है वो और या जो प्रोसीजर है उसको हम स्टडी करेंगे. कर्व स्केचिंग. So sketching functions is facilitated with information we have acquired in this chapter. जो इंफॉर्मेशन हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी है, यानी जो मैक्सिमा और मिनिमा और टर्निंग पॉइंट्स यानी जो क्रिटिकल पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, उनको पढ़ते हुए हम फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी फंक्शन की जो स्केचिंग है वो किस तरह से है, यानी उस फंक्शन को किस तरह से हम स्केच कर सकते हैं. तो ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि किसी फंक्शन को की कनकेविटी क्या होगी किसी क्रिटिकल पॉइंट पे, और जो फंक्शन है वो रिलेटिव मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा, ये तमाम हमें हेल्प करते हैं कि किसी भी कर्व को हम स्केच कर सकें. सो वन कैन गेट अ फीलिंग फॉर द जनरल शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ फंक्शन without determining and plotting a large number of ordered pairs. तो हम बेसिकली फंक्शन की एक जनरल जो फीलिंग है और उसकी जनरल जो शेप है उसको डिस्कस कर सकते हैं बगैर इसके कि हम बहुत ढेर सारे नंबर्स पर उसको इवेल्युएट करें फंक्शन को और उसका ग्राफ ड्रॉ करें. So key data points. So there are some certain points which are significant in sketching the curves. So in determining the general shapes of the graph of a function, the following attributes are the most significant. Number 1 is relative maxima and minima. Number 2, inflection points. Number 3, x and y intercepts, and number 4, the ultimate direction. तो functions की general shape और उनके graphs find करने के लिए चार चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अगर हमें वो चार चीज़ें पता हों तो हम उस फंक्शन की शेप रफली फाइंड कर सकते हैं, यानी उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. नंबर 1 है रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा, दूसरा है इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, तीसरा है एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स, और नंबर 4 है अल्टीमेट डायरेक्शन. सो नाउ वी डू एन एग्जांपल टू एक्सिबिट दिस टेक्निक. सो कंसिडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स is equal to x cube divided by 3 minus 4x square plus 12x plus 5. And now basically we want to sketch the graph of this function. So the first part to solve this example is to find relative maxima or minima. So to complete the question, maybe we can say that then sketch the graph of f of x. So solution, so we start the solution here.
The first part of the solution starts with identification of maxima and minima. So that's where the solution of the example starts. तो मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन को फाइंड करते हैं. सो इफ वी गो बैक हियर देन हमारे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो है 3x² डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 इंटू 2x प्लस 12 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो 0 है. तो ये होगा आपके पास x² माइनस 8x प्लस 12. So the first derivative is f prime of x, which is equal to x² minus 8x plus 12. So put f prime of x is equal to 0. Gives you x² minus 8x plus 12 is equal to 0. So if we factorize this function, then we get x² minus 6x minus 2x plus 12 is equal to 0. So we get x into x minus 6 minus 2 into x minus 6 is equal to 0. तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने पुट किया और अब हम उसको फैक्टराइज करेंगे कि उसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो क्या हैं. तो यहाँ पे हम x माइनस 6 को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास x माइनस 2 बच जाएगा. तो वी हैव x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x minus 2 is equal to 0, which means that x is equal to 6 and x is equal to 2 are the x coordinates of the critical points. So substitute these values, substitute x is equal to 6 with 2 in the given function, the given f. So we get f of 2, which is 2 cube divided by 3 minus 4 into 2 square plus 12 times 2 plus 5 is equal to, if you simplify this, you get 47 divided by 3, which can also be written as 15 2 by 3, only 15 units plus 2 by 3 units. Similarly, f of 6, this will be 6 cube divided by 3 minus 4 into 6 square plus 12 into 6 plus 5. So this is equal to 5. तो हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो ये हैं. सो द क्रिटिकल पॉइंट्स आर टू व 15 plus 2 by 3 and 6 व 5. So this is the first piece of information needed. So if we start drawing graph, then so here we have 5. और यहाँ पे x एक्सिस पे हमारा 5 है, ये y एक्सिस पे हमारा 5 होगा. लेट्स टेक दिस टू बी 5, हमारा 10 है, दिस इज 15. सो दिस इज द पॉइंट which is 15 plus 2 by 3 or roughly, and so we need to adjust our graph a little, so we shift our 5. So 5 will be somewhere here. So one of the key points is 6 or 5, जो कि यहाँ पे है.
this is the point, this is the critical point, और एक हमारे पास यहाँ पे है critical point जो कि 15 plus 2 by 3 roughly somewhere here. So we have this initial piece of information. These are our critical points. This was our step number 1, and so this is, but now we need to find the type of this critical point. So to find the type, we take second derivative. Of f. So we have f prime fx given by x square minus 8x plus 12. तो इसका हम सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा हमारे पास 2x माइनस 8, x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का 0 होगा. सो फर्स्ट वी चेक फर्स्ट पॉइंट, x coordinate. So if we check f double prime of 2, this is 2 into 2 minus 8, which is equal to minus 4, which is less than 0. So this implies that a relative maximum occur at 2 or 15 plus 2 by 3, क्योंकि यहाँ पे लेस देन 0 होने का मतलब ये है कि कनकेव डाउन है फंक्शन, कनकेव डाउन. इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमम है. तो रिलेटिव मैक्सिमम होने का मतलब ये है इस पॉइंट पे, दिस इज अवर पॉइंट 2 over 15 plus 2 by 3, और ये हमारा पॉइंट है 6 or 5. तो यहाँ पे अब आपके पास अगर एक रिलेटिव मैक्सिमम आ रहा है तो इट मीन्स कि यहाँ पे फंक्शन कनकेव डाउन है. तो रफली फंक्शन इस टाइप का है कि इस पॉइंट से लेफ्ट और राइट पे वैल्यूज जो है वो f(x) की जो वैल्यू है वो 15 plus 2 by 3 से कम है. So now at second critical value, which is x is equal to 6, f double prime of 2 is given by 2 into 6 minus 8, which is equal to 4 and greater than 0. So f is concave up, which means that a relative minimum occur at 6 or 5. So now if we move back to our graph, यहाँ पे relative minimum है, it means कि इसकी जो इर्द गिर्द के फंक्शन हैं वो कुछ इस टाइप के हैं. यानी इसके इर्द गिर्द जो वैल्यूज हैं फंक्शन की वो कुछ इस टाइप की हैं और फंक्शन की शेप इस तरह की बनेगी. So the next step is to find the inflection point. So to find the inflection point, we take the second derivative, which is 2x minus 8. So we put f double prime of x equal to 0, means that 2x minus 8 is equal to 0, and this gives us x is equal to 4. So we put x is equal to 4 in f, we get 4 or 10 plus 2 by 3. तो f में जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास बेसिकली f of 4 जो आएगा वो होगा 10 or 2.3, 10 plus 2 by 3, or which was basically 32 by 3. So we get this as an inflection point.
So what we must note that there must exist an inflection point between relative maximum, which was at 247/3, and the relative minimum at 645. For a continuous function, the concavity of function must change between adjacent critical points. तो जो concavity होती है functions की दो adjacent points के दरमियान, यानी दो जो critical points होते हैं यानी maxima और minima जिन पे occur हो रहा है उनके दरमियान में concavity must change होती है. तो जिस point पे change होती है वो critical point होता है, इसीलिए आपके पास जो critical point है वो भी must exist करता है. So in this case the point is 4 10 plus 2/3. So if we go back to our graph, then here we have 4 and here we have roughly the point 10 plus 2/3. So if we roughly try to join this function, so this is, so here we have the point 4 and 10 plus 2/3. So this is the inflection point where the concavity of the function changes, यानी tangent line राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आ जाएगी. So step number 3 is to find the intercepts. So the y-intercept is at x is equal to 0. So it means that in this case, if you put f of 0, you get 5. यानी जो given function है उसमें अगर हम x is equal to 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y-intercept आ जाएगा. इसका मतलब है कि आपका जो y-intercept है वो 0 व 5 पे है. तो आपके given function में आप x को अगर 0 पुट करें इस function में तो आपके पास जो है वो f of 0 5 आता है. So that's why. So now if you move to draw the intercept, then at x is equal to 0, y is equal to 5. So this is your y-intercept. So your graph roughly goes like that. What also is important to note is that for curve sketching we just find the y-intercept. यानी curve sketching में हमें y-intercept ही एक important intercept होता है जो कि find करना होता है. x-intercept जो होता है वो इतना critical या crucial नहीं होता और इतना important भी नहीं होता कि उसको find किया जाए. So the next is to find the ultimate direction. So if you recall, in the earlier lectures we also studied about the, जब हमने पोलिनोमियल फंक्शन पढ़े थे तो उनकी अल्टीमेट डायरेक्शन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि पोलिनोमियल फंक्शन की जो अल्टीमेट डायरेक्शन होती है वो उसके जो हाईएस्ट पावर होती है उस फंक्शन यानी जो डिग्री होती है उस फंक्शन की उस पर डिपेंड करती है. सो फॉर एफ द हाईएस्ट पावर टर्म इज x³/3. तो हमारे गिवन फंक्शन में हाईएस्ट पावर की जो टर्म है वो x³/3 है. टू डिटरमिन द बिहेवियर ऑफ एफ x becomes more and more positive, we need to observe the behavior of x³/3 as x become more and more positive. तो x जब इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो हम जब f का बिहेवियर फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए ये काफ़ी है कि हम x³/3 का बिहेवियर चेक करें जब x जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाता है. तो हम ये चेक कर सकते हैं कि जैसे जैसे x पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो x³/3 भी जो है ये एक पॉजिटिव टर्म है तो ये भी जो है वो एक पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगी. सो दिस बेसिकली टेल्स यू द अल्टीमेट डायरेक्शन ऑफ द ग्राफ. सो इफ वी गो बैक टू द ग्राफ देन आवर अल्टीमेट डायरेक्शन इज जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो f of x की भी जो वैल्यू है वो भी बढ़ती जाएगी. So this would be the ultimate direction of the graph. So this is sort of a final sketch of the graph. यानी आपको जो फंक्शन गिवन था उसको आपने रफली ड्रॉ कर लिया है कि उसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा.
यू सी दैट कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन हमने स्टडी की है पिछले लेक्चर में, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट्स और कनकेविटी की टाइप अगर आपको पता हो तो आप किसी भी फंक्शन के ग्राफ का स्केच फाइंड कर सकते हैं रफली, विच इज़ टू स्केच द ग्राफ ऑफ the function f of x is equal to x to the power 4 divided by 4 minus 8x cube divided by 3 plus 8x square. So solution is that first you take the first derivative, तो ये आपके पास आ जाएगा 4x cube divided by 4 minus 8 into 3x cube 3x square divided by 3 plus 8 into 2x. 4 will cancel with 4, you get x cube, and 3 will cancel with 3, you get minus 8x square and plus 16x. So you put f prime of x is equal to 0 to find the critical points. So this gives you x cube minus 8x square plus 16x is equal to 0. तो अब आप x को कॉमन लेंगे यहाँ से, तो आपके पास 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 आ जाएगा इक्वल टू 0. So you can basically find that this is x into x minus 4 added to x minus 4. So you get x is equal to 0 and x is equal to 4 two times, which is just basically means that x is equal to 4. तो आपके पास दो ही क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इस केस में भी. So at f of 0 at x is equal to 0, f of 0 is 0, or at x is equal to 4, f of 4 is given by 21 plus 1 by 3. So this is, जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे 4 की यहाँ पे, तो आपके पास f of 4 जो है वो आएगा 21 plus 1 by 3. So 0 0 and 4 what 21 plus 1 by 3 are the critical points. So now we can start drawing the graph. तो आपके पास एक क्रिटिकल पॉइंट तो आया है ओरिजिन यानी 0 0 पे, और दूसरा जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है वो है यहाँ पे आपके पास 4 है. Roughly this is 5, this is 4, this is 5, this is 10, this is 15, and this is 20. So the point is that 4 over 21 plus 1 by 3, so it is something roughly here. So this is your another critical point. So you have two critical points, one is at 0 0, another is at 4 over 21 plus 1 by 3. So this is the first step of sketching. So now what you do, so take f double prime of x, to basically find the nature of the critical points. You get 3x square minus 16x plus 16. So at x is equal to 0, you have f double prime of 0 is equal to 16, which is positive. So the function is concave up. So it means that we have, there is relative minima at 0 0. तो यहाँ पे आपका ग्राफ रफली कुछ इस तरह का होगा, एंड देन
when you check x is equal to 4, then f double prime of 4 is equal to 0. So no conclusion can be drawn. So no conclusion can be drawn कि यहाँ पे फंक्शन concave up है या concave down है. So but this no conclusion is basically about the concavity. So no conclusion can be drawn about the concavity of the function. So now we find the further derivatives. So if you find f triple prime, then this is equal to 6x minus 16. So f triple prime of 4 is equal to 6 into 4 minus 16, which is 8, and not equal to 0. So since the order of derivative is odd, an inflection point occurs at 4, 21 plus 1 by 3. So it means कि यहाँ पे हमारे पास एक inflection point है. What also is important that अगर आपके पास कोई second derivative किसी point पे 0 आ जाए तो ये एक necessary condition है inflection point के लिए, लेकिन ये एक sufficient condition नहीं है. It means कि sufficient condition ये तब होगी अगर हम उसका further derivative लें, यानी third derivative लें, तो उस पॉइंट के ऊपर अगर थर्ड डेरिवेटिव उसका नॉन ज़ीरो है तो तब हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो पॉइंट है इन्फ्लेक्शन पॉइंट है. तो इसी तरह अगर हम उसका फोर्थ डेरिवेटिव लें, अगर वो आपके पास नॉन ज़ीरो आया तो फिर वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं होगा. तो यानी 2 से ऊपर ऑड ऑर्डर्स के अगर उसका होंगे, लोवेस्ट जो नॉन ज़ीरो डेरिवेटिव उसका ऑड ऑर्डर का होगा तो एट द पॉइंट यानी x इज इक्वल टू 4, तो हम कह सकेंगे कि ये फंक्शन का इन्फ्लेक्शन पॉइंट है. अदरवाइज हम ये नहीं कह सकते कि ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है. So now we move to the next step, which is about finding the inflection point. So now we find the all inflection points. तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स को 0 के बराबर पुट करते हैं हम. सो इट मीन्स दैट 3x square minus 16x plus 16 is equal to 0, and if you take a factorization of this, you get 3x minus 4 into x minus 4 is equal to 0. तो ये आपके पास आएगा x is equal to 4 by 3, और दूसरा सोल्यूशन आएगा आपके पास x is equal to 4. तो x is equal to 4 वो पॉइंट है जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. सो वी ऑल्सो नीड टू हैव शो दैट कि ये जो हमारे पास नेसेसरी कंडीशन है ये सफिशेंट भी है या नहीं है. सो नाउ इफ यू टेक द f ट्रिपल प्राइम ऑफ x, which we calculated on the last slide, was given by 6x minus 16, और अगर आप पुट करें f ट्रिपल प्राइम ऑफ 4 by 3 तो ये आपके पास आ जाएगा 6 into 4 by 3 minus 16 2, which is minus 8 and not equal to 0. तो इसका जो ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव है लोएस्ट एट द पॉइंट 4 by 3 नॉट 0 है, सो 4 by 3 f of 4 by 3 is
also an inflection point. तो f of 4/3 भी हम फाइंड कर सकते हैं. तो f of 4/3 हमारे पास है, if you calculate it you get something 8.69. so it means कि ये जो आपका पॉइंट है ये है 4/3 व 8.69. so now if you go back to the graph, then at x is equal to 4/3 and 8.9, so this is something which is 4/3, and here you have 8.9. or 8.69. so this is an inflection point. तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कनकेविटी चेंज हो रही है. so just something like that, and then it will slowly start to move, go up and move outside. so the next step is to find the y-intercept. so we know that at x is equal to 0, y is equal to 0, so 0, 0 is the point which we get from y-intercept. ये पॉइंट हमारे पास पहले से ही है, so there is no new information is this, and the last step is to find the ultimate direction. तो x अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो x to the power 4 divided by 4 भी जो है ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है. so it means f of x is going towards positive infinity. और अगर x जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो इस सूरत में भी जो x to the power 4/4 है ये भी स्टिल पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि x to the power 4/4 पे जिसकी वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगी चाहे x जितना भी नेगेटिव हो, और f of x जो है वो भी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है. so if you go back to the graph, then you can complete your graph something like to be of this kind. and also so the graph will be something of this kind. so yeah, you were given some points, and using those points you have worked out that the graph would be of certain kind. 8.69. तो ये दो आपने फाइंड किए, इसके जो थे इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, यहाँ पे कनकेविटी चेंज हो रही है, और ये एक ही ऐसा पॉइंट था जिस पे हमने श्योरली बताया कि क्या है, और यहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमम है या मिनिमम है. सो वी हैव सीन वन न्यू थिंग के इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बारे में यही काफ़ी नहीं होता कि उसका सेकंड डेरिवेटिव जो हो वो ज़ीरो हो. ये एक नेसेसरी कंडीशन है. सो if x is an inflection point for f, then the second derivative f double prime of x is equal to 0 if it exists. But this condition does not provide a sufficient definition of a point of inflection. So one also needs the lowest order above the second non-zero derivative to be of odd order, यानी थर्ड, फिफ्थ या इसी तरह सेवन्थ ऑर्डर का हो. यानी जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट्स आया था, यहाँ पे कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो रहा था कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट है या कनकेव अप है या कनकेव डाउन है. तो हमने क्या किया कि इसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड किया. तो जब हमने इसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड किया तो बेसिकली ऑड ऑर्डर का डेरिवेटिव है और पॉइंट 4 के ऊपर ये नॉन ज़ीरो है. सो दिस इज़ द डेफिनेशन or a note which basically gives the sufficient condition for the point to be an inflection point.
सिमिलरली इस दूसरे पॉइंट के बारे में भी जो कि 4/3 था, हमने ये चेक किया कि ये नॉन ज़ीरो है। और इससे पहले भी जो हमने लास्ट एग्जांपल में डिस्कस किया था, इस पॉइंट को भी हम चेक कर सकते हैं। इसका जो डेरिवेटिव है, थर्ड डेरिवेटिव, वो भी नॉन ज़ीरो होगा। यानी फॉर एग्जांपल इफ़ यू चेक f triple prime of x, and it will be just 2, which is of course non-zero at, which of course implies that f triple prime of 4 is non-zero. So this was a new piece of information about the inflection point which we discussed today. So next topic हमारा है restricted domain consideration. So in this section we will examine procedures for identifying absolute maxima and minima when the domain of a function is restricted. अगर किसी function की domain restricted हो तो हम absolute maxima और minima भी find करने की procedure जो है उसको study करेंगे इस section में. So when the domain is restricted. So very often in applied problems the domain is restricted. For example, if profit P is stated as a function of the number of units produced x, it is likely that x will be restricted to values such as x is between 0 and xu. यानी अगर प्रॉफिट जो हो हमारे पास फंक्शन हो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस का, तो जाहिर है कि किसी भी प्रोडक्शन प्लांट की या प्रोडक्शन कंपनी की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है प्रोड्यूस करने की, तो इसीलिए हमारे पास जो डोमेन होती है वो restricted होती है, जिसको हम फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं x is between 0 and xu. So x, in this case x is restricted to non-negative values. There is no production of negative quantities which are less than or equal to some upper limit xu. जैसा कि हमने कहा कि इस केस में हमारे पास x जो है वो नॉन नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं हो सकते, तो इसलिए इसकी जो अपर वैल्यू है वो xu है. So the value of xu may reflect production capacity as defined by limited labor, limited raw materials, or by the physical capacity of the plant itself. तो xu से बेसिकली वो लिमिटेशन हमें पता चलती है या वो उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है या जो लेबर है वो कितनी है, यानी कम है, रॉ मटेरियल कम है, या फिर इसी तरह जो कैपेसिटी है प्लांट की वो कम है. So in searching for the absolute maximum or absolute minimum of a function, consideration must be given not only to the relative maxima and minima of the function, but also to the endpoints of the domain of the function. यानी जब हम फाइंड करेंगे कि absolute maxima और minima क्या है किसी डोमेन पे, तो हम ना सिर्फ relative maxima और minima को देखेंगे, बट उसके अलावा हम जो डोमेन ऑफ द फंक्शन है और उसके जो एंड पॉइंट्स हैं उनको भी कंसिडर करेंगे. So for example, if we draw the figure, then let's say here we have x1 and here we have x2 and here we have, let's say, xu. Here is roughly the maximum capacity. Let's say this is our function. तो इस फंक्शन के हम देख सकते हैं कि ये आपका एब्सोल्यूट मिनिमम है, और ये आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम है. और x is between 0 and xu. So this is absolute minimum which occurs at f of x2. ये आपका जो पॉइंट है ये है f of x1, और ये जो आपका पॉइंट है दिस इज f of xu. And this is your point f of 0.
This is just simple sort of graph which represents the different sorts of outputs for the input function f of x. So in the above figure, the domain of the function is restricted to values between 0 and xu. The absolute maximum for f occurs at xu, which is the right endpoint of domain. The absolute minimum occurs at x2, which is also a relative minimum on the function. तो इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि डोमेन जो है वो 0 से xu है और आपके पास जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है वो xu पे, जो कि आपका ये जो राइट एंड पॉइंट है यहाँ पे आ रहा है, और एब्सोल्यूट मिनिमम जो है ये x2 पे आ रहा है, जो कि आपके पास रिलेटिव मिनिमम भी है. So next we study the procedure for identifying absolute maximum and minimum points. So given the continuous function f defined over the closed interval xl and xu, जिसमें xl जो है आपकी लोअर लिमिट है और xu जो है ये अपर लिमिट है. So there are few steps. So the first step is to locate all critical points x star f of x star which lie within the domain of the function and exclude from consideration any critical values x star which lie outside the domain. तो आप सबसे पहले critical values find करें और x की वो values को exclude कर दें जो कि domain से बाहर है. So the compute the value of f of x at the two endpoints of the domain. उसके बाद आप जो end points हैं f of xl और f of xu, इन दोनों पे find करें. उसके बाद आप compare करें value of f of x star for all relevant critical points with xl and xu. उसके बाद आप जो तमाम क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनके ऊपर f की वैल्यूज़ को जो xl और xu हैं उन पे जो वैल्यूज़ हैं उसके साथ कंपेयर करें. And the absolute minimum is the largest of these values and the absolute minimum is the smallest of these values. तो absolute maximum जो होगा वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी और absolute minimum जो होगा वो सबसे छोटी उन वैल्यूज़ में जो आ रही है वो होगी. So now we do the example. So example is determine the locations and values of the absolute maximum and minimum for the given function. The function f of x is x cubed by 3 minus 7x squared by 2 plus 6x plus 5 and x is between 2 and 10. तो अब फंक्शन गिवन है जिसके लिए हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है और डोमेन जो है वो 2 और 10 के दरमियान है. So step number 1 is to find the all critical points. So we find f prime of x, which is given by 3x squared divided by 3 minus 7 into 2x divided by 2 plus 6 into 1 plus 0, which is the derivative of constant function. तो ये आपके पास आएगा x square minus 7x plus 6. So when you put f prime of x is equal to 0, you get x square minus 6x minus x plus 6 is equal to 0. 7x को आपने sum of the two numbers लिख दिया, which is minus 6x and minus x. तो यहाँ से आपके पास आएगी फैक्टराइजेशन जो कि होगी x minus 6 and x minus 1, which is equal to 0. And this will give you x is equal to 6 and x is equal to 1. So now you have x is equal to 1, which is not in the domain. So x is equal to 1 is not in the domain. So 6f of 6 is the only critical value critical point in the domain. So now you find f of 6 and this will be equal to minus 13 जब आप f को equal to 6 put करेंगे given function में. So this point is basically 6 व minus 13.
यानी आपको जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 6 और -13 है। So now you find f double prime of x, which is equal to 2x minus 7, and f double prime of 6 is equal to 2 into 6 minus 7, which is equal to 5, जो कि greater than 0 है, so it means कि f is concave up and there is relative minimum at 6 or minus 13, तो आपके पास 6 और -13 पे relative minimum है। So now you move to the step number 2, compute the value of f of x at the two endpoints. So these values are f of 2 and f of 10. f of 2 is equal to 2 cube by 3 minus 7 into 2 square divided by 2 plus 6 into 2 is equal to 6 into 2 plus 5 is equal to 5 plus 2 by 3, which is also can be written as 17 by 3. और आप f of 10 फाइंड करेंगे तो आपके पास आएगा 48 into 1 by 3. So f of 16 is 48 plus 1 by 3, which is 145 by 3. So now we move to the step number 3, where we compare f of 2, f of 6 and f of 10. So we find that the absolute minimum of -13 occurs at x is equal to 6, and the absolute maximum of 48 plus 1 by 3 occurs at x is equal to 10. क्योंकि हमारे पास जो तीन वैल्यूज हैं इनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो x is equal to 10 पे आ रही है, जो कि 48 plus 1 by 3 है, और x is equal to 6 पे हमारे पास सबसे कम वैल्यू आ रही है जो कि -13 है। तो एब्सोल्यूट मिनिमम इस डोमेन पे हमारा होगा -13 और एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा 48 plus 1 by 3. So that's how basically you find that on the restricted domain absolute maximum and minimum can be found quite easily. यानी आपने क्रिटिकल पॉइंट्स पे f की वैल्यू फाइंड की और उसके बाद एंड पॉइंट्स पे आपने f की वैल्यू फाइंड कर ली, तो उसके अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो होगा आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम और जो सबसे छोटी वैल्यू है वो होगा एब्सोल्यूट मिनिमम. So this is all about today's lecture. So basically we covered sections 16.3 and 16.4. हमने स्टार्ट किया कर्व स्केचिंग से, उसके बाद हमने रेस्ट्रिक्टेड डोमेन कंसिडरेशन को पढ़ा कि वो क्या होती है और रेस्ट्रिक्टेड डोमेन हमारे पास कब आती है, और हमने प्रैक्टिकली भी देखा कि रेस्ट्रिक्टेड डोमेन किस तरह से फाइंड की जाती है. उसके बाद हमने एक प्रोसीजर आइडेंटिफाई किया कि जिसकी मदद से हम किसी भी फंक्शन के एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आपके पास जो डोमेन है वो रिस्ट्रिक्टेड हो. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन नंबर 17.1 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 17 का, और बेसिकली हमने जो अभी तक ऑप्टिमाइजेशन प्रोसीजर्स पढ़े हैं उनकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे. तो एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे, उसकी रेवेन्यू एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, कॉस्ट में एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, और प्रॉफिट में उसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, और आखिर में जो मार्जिनल अप्रोच है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की वो पढ़ेंगे. उम्मीद है आज के लेक्चर में आपने जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सीखा होगा और ये आप अच्छी तरह तैयार करेंगे ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझने में आसानी हो. तो हमें नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.